It's the first time I'm trying bokchoy and lettuce, so I'll be trying it with ramen and egg. Here's the bakchoy. I'll be making pieces out of it. बिकॉज मैं एक बार में इसको पूरा नहीं खा सकती, जैसे जहाँ कोरियन एंड जापानीज़ फूड में दिखाया जाता है। मुझे ऐसी आदत नहीं है, बट एक्चुअली अच्छा होता है क्योंकि हम खाने को जितना कम पकाएंगे उतना उसका न्यूट्रिशन जो है वो कम लॉस होता है। सो वी विल ट्राई टू कुक इट लेस एंड नॉट ओवर कुक इट। बी चॉपिंग लेट्यूस इनटू फाइन पीसेस so it cooks quick. Taking a little bit amount of soy sauce in pan and bakchoy, add water and the lettuce. Turn on the gas and let it boil. अभी ये बस उबलना शुरू हुआ है एंड पकना भी स्टार्ट हो गया है। टू के नेक्स्ट तो मैं इसको साइड से डाल दे रही हूँ। ये जो अंडा है ना, it's stuck with the bokchoy. I'm trying to separate them, but while adding tastemaker, जब तक इसमें मसाला नहीं पड़ा था ना, it was smelling really bad, but now it smells good. Just try to keep things a little bit uncooked so that its nutritional value it's not completely lost. So here it is.